Hi guys, good morning. Are you good to go? Okay, nice. Okay, guys. Before I start, I just want to know whether you succeed in installing the Python. Everyone, last class, few of us were facing some issue. Like I guess Niti was there, and one more guy was there. Gordon's. Is it working for you? And one more people was there. You're not joined yet. Okay. Yeah, Abdul. Yeah, Abdul. Good morning. So, okay, fine. So let's go ahead. Let's see how these things work. How can we write a code in Python, right? So this is your software, right? Which is called interactive development and learning environment, isn't it? Okay. So it is having two parts. Don't worry, I'll come to Jupyter Notebook. Okay, we'll see Jupyter Notebook as well. Okay, after this. Alright, guys. So this ideally is having two parts, right? The first part that you can see, it's a Python shell. Okay, so Python shell is just a interface where whatever instruction that you give, okay, like I am giving it an instruction to print hello world. Print is a inbuilt function of Python, okay, and hello world I want to print, right? So it will print hello world, all right. So whatever the instruction that you give over here, Python will interpret that and will give you the result. All right. But it can't be used to create any application, right? This thing can't be used for creating any application because this thing can't be saved anywhere. If I close it, it closed. It is not saved anywhere, right? So we will do what? No, no, Rajesh. Eh, just go ahead with the Jupyter notebook. I'll come to that part very soon. Don't worry. Okay. So it is not saved. The program is not saved anywhere, right? So that's why we require a space where you can save a file. So what you can do, once you have the Python shell, here you get an option of file and then new file. Okay? At the corner top pay file and then new file, right? So what is this? This is called Python code editor. Those who are using Jupyter Notebook or any other software, if you know how to use it, please use them. Okay, because few queries I am getting, right? Don't worry about it. Okay, those who don't know, kindly don't worry, right? Because we are coming to that part very soon, right? But before using that, there are few things I have to tell you, okay? Because these are very important things, okay? As far as the as far as the interviews that you are going to give in future, right? Okay, so because I'll tell you few things over here that may be asked in your interview, so please concentrate, right? So first part is what? Python shell, and second part is what? Python code editor.
Okay. Core editor is a space where you can write the full-fledged code. Like for example, if I write over here, hello world, it is not, and I'll press enter. I'm not getting any result, right? So see, just some random things I had given over print, 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 print. Okay, print hello world, print equal to print 9 into 2. Okay, print we are learning Python, but it is not giving me any output. Okay, same thing if you see in Python cell. Okay, let me just try in Python cell. Just understand it the difference. What happened? In the next line, you get the output. Okay, if I'll execute it over here, in the next line, I'll get the output. Right? As I press enter, I am getting the output, right? Isn't it? Right? So the problem is this thing is not getting saved anywhere. Okay, but we can save this guy. Okay, we can save this particular program somewhere in our system. Okay, what we can do, we can save this program somewhere in your system to be executed all at once, right? Because when you see any software, when you see any application, अभी software or application whatever you see, that is not created in one line. एक line में तो नहीं create होता ना, उसका जो program होता है वो एक line का होता नहीं है, right? Whatever software, whatever application that you use basically contains multiple lines of program. ठीक है? It will contain multiple lines of program. It will not contain just one or two line, right? So we need to know how can we save this guy and how can we execute it. Okay. So we have a button over here. If you see at the top, after you write a program in Python core editor, run and run module. Okay. So run module, I click. So it will ask me to save. So I can choose any location in my system to save. किधर भी save कर सकते हैं. Prefer D drive, E drive or desktop. Like I am saving it on desktop. Okay. I'll just save this file on the desktop and I can give it a name, demo Python 1. Okay, just giving it a some name, demo Python 1. Okay, save it. So once it is saved and then run, you can see the output, all four outputs you can see at the same time. So what can we conclude? We can conclude that whatever program that we write over here, isn't it? And then we execute, the output we will get in Python cell. Okay. And what is the extents? Okay, fine. So now let's see if I will make some changes in this program. I'll add something new over here. Let's say I'm adding print star 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 print 5 multiplied 5 plus 2 multiplied by 9 minus 7. There's some random calculations, right? Okay. And then again I'll run it. So it will save, ask me to save, and then I run. You can see all 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here output is what? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So whatever code that you write over here and you run it, you get the output where? In Python cell. Where? In Python cell. All right. Okay. Now there are few questions over here.
No, Jupyter notebook creating problem with, so Jupyter notebook, I'll come to that part after finishing this thing. Yeah. नीति का इंस्टॉल नहीं हुआ, कोई बात नहीं थी, आई टेक केयर ऑफ थिंग्स लाइक, 1 मिनट दो आप मुझे। हम फाइल में सेव नहीं कर सकते हैं? फाइल में सेव नहीं कर सकता, आई डिडंट गेट, फाइल में सेव नहीं कर सकते, व्हाट यू कांट सेव, समझित क्या सेव नहीं कर सकते हैं? No, no, you please don't give any space between them, right? Between the name. Okay, Kanishk, space आप दोगे, it will raise an error. बाद में यूज करने प्रॉब्लम होगी, so please don't give any space. Sumerjit, what's your question? हम फाइल में सेव नहीं कर सकते हैं? हाँ हार्दिक, I'll help you. See, again I'll repeat the things. ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, देखिए जो जुपाइटर नोटबुक वगैरह यूज कर रहे हैं, प्लीज जस्ट हैव सम टाइम, आई विल कम टू दैट पार्ट। ठीक है, अभी मैं सीधे जुपाइटर नोटबुक पे स्विच नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना है रिलेटेड टू पाइथन आइडियली, राइट? सो आई गेस यू कैन इजिली एक्सेस पाइथन सेल, राइट? ओके, पाइथन सेल जब ओपन होता है, देन यू विल गेट अ ऑप्शन ओवर हियर, फाइल एंड देन न्यू फाइल. So this is a blank white color window that you see. Okay, this is called Python code editor. इसे क्या कहते हैं? Python code editor. ठीक है? Fine. Now what we will do? We'll write over here print. कुछ भी एक रैंडम सा कमांड दे देते हैं, राइट? He, I am learning Python. फिर कुछ दे दिया यहाँ पे प्रिंट, इधर दे दिया इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू। ठीक है, प्रिंट हेलो गूगल, प्रिंट ऐसे कुछ स्टार स्टार दे दिया। ठीक है, प्रिंट 9 × 7 ऐसे कुछ दे दिया। ठीक है, ऐसे कुछ रैंडम सा कुछ कोड लिख दिया। ठीक है, नाउ आई हैव टू रन दिस कोड, है ना? कैसे रन करेंगे बताइए? वी कैन रन दिस बाय क्लिकिंग ऑन रन बटन and then run module. When you click on run button, run module, it will say source must be saved. It will say to save your file in your system. कहीं तो इसे आप इसे सेव करो, ओके? जब ही एग्जीक्यूट होगा, राइट? सो क्लिक ऑन ओके. When you go to save, it will ask you the location. Where do you want to save? I want to save on desktop, for example. You can choose any location, okay? And I'll give it a name, demo. Don't give space and don't give the name Python. Okay, at least give something, like don't give just Python. Only many people give only name Python, right? So I just give it a name. It will be saved somewhere. अब ये जैसे सेव होगा, आप देखो यहाँ डेस्कटॉप पे सेव हो गया। ठीक है, दिस इज सेव्ड, है ना? डेमो पाइथन 1 पहले सेव किया, डेमो पाइथन 2 अभी सेव किया, राइट? बोथ आर सेव्ड। एंड नाउ इफ यू सी, यू कैन गेट द आउटपुट ऑन द पाइथन सेल। कोड कहाँ लिखा है? कोड एडिटर में। एग्जीक्यूट होने के बाद आउटपुट कहाँ आया? पाइथन सेल पे। नाउ लेट्स कम टू योर थिंग्स वन बाय वन, फिर से। राइट हार्दिक, फाइल पे जाके न्यू फाइल, करेक्ट। ओके, नाउ आई विल कम टू, ओके, नीति, कैन यू शेयर योर स्क्रीन? आप लास्ट क्लास में फोन यूज कर रहे थे, सो आई गेस राइट नाउ यू आर यूजिंग सिस्टम, राइट?
Niti, you are using system? Okay. So Niti, can you share your screen, please? Niti, kindly share your screen. I'll stop sharing. Are you getting the screen sharing option? No? Okay, fine. I'll try to make you panelist right now. You will get the screen sharing option. Please try now. Oh, you please accept. नीति प्लीज एक्सेप्ट, आप एक्सेप्ट करो जो आपको मैं एक पैनलिस्ट के लिए भेज रहा हूँ तो नाउ विल गेट द ऑप्शन। अब्दुल करीम, व्हाई आर यू नॉट गेटिंग द स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर डिस्कशन करते हैं, लॉन्ग टर्म डिस्कशन चलेगा क्यों नहीं आ रहा स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन। फिलहाल ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है अब्दुल? ओके निधि, at the bottom you will see a green color button. Okay, green color button to share screen, kindly use that. यदि आप देखो आपकी स्क्रीन पे, आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हो, ठीक है? आप माइक अनम्यूट कर सकते हो। यहाँ बॉटम में एक ग्रीन कलर का शेयर स्क्रीन का बटन होगा, आप उस पर क्लिक करो और अपना डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लो, जिससे मैं आपका स्क्रीन देख पाऊँ, जिससे आपको गाइड कर सकूँ कि व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू, राइट? हेलो ये नहीं थी, प्लीज टेल मी। हाँ सर, बताइए। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ बट वो हो नहीं रहा है। ये हो जाएगा। आप शेयर स्क्रीन पे आपने क्लिक किया हाँ हाँ, मैंने तो तो सबसे उससे पहले भी किया डेस्कटॉप था। का ऑप्शन आ रहा होगा टॉप पे। नहीं, कोई भी और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। अ, अब शेयर स्क्रीन पे आप क्लिक करें तो क्या हो रहा है? बस वो मतलब उस विंडो को हटा दे रहे हैं, बस इतना ही आ रहा है। फिर दोबारा से एक शेयर का बटन आ रहा होगा। हाँ, वो ग्रीन कलर का बटन आ रहा है। हाँ, तो ग्रीन कलर के बटन पे आप क्लिक करो, ठीक है? फिर एक शेयर का और बटन आ रहा होगा। हाँ ओके, मैंने किया बट वो कुछ भी उसके बाद कुछ प्रोसेस में नहीं आ रहा है। Post editable participant. ओके। कैसे भी आपको बताऊं मैं पोस्ट डिजेबल्ड बता रहा है वो पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर।
आप तो पैनलिस्ट में हो तो आपको डिसेबल क्यों, 1 मिनट। Pritesh, okay. Yeah, Niti, you can try it now. मोबाइल हाँ सर, अब आ रहा है। ठीक है। स्क्रीन पे किस पे क्लिक करना है? कौन से? अच्छा, स्क्रीन पे क्लिक करना है सर। डेस्कटॉप, आप डेस्कटॉप सेलेक्ट करो, जो पहला डेस्कटॉप का जो फर्स्ट ऑप्शन जो है। स्क्रीन फर्स्ट है स्क्रीन। बस। फील्ड एरर दिखा रहा है। हम्म, Screen says failed to start. Please try again. एक मिनट आप उसको, एक मिनट मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। ओके, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? ठीक आपकी है, स्क्रीन मैंने स्टॉप शेयरिंग किया, एक बार आप फिर ट्राई करो तो। सेम वही दिखा रहा है। विंडोज लैपटॉप ही है ना? हम्म तो प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, बहुत इजीली शेयर हो जाता है। मैक वगैरह में थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ा सेटिंग चेंज करना पड़ता है, बट इसमें तो नहीं आती प्रॉब्लम। एक मिनट में इसको- हार्दिक, मैं आपको पैनलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, एक बार आप ट्राई करके चेक करो तो आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, हार्दिक यू देयर? ठीक है, जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस की कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ कनिष्क, मैं रैंडमली मैं किसी को भी ऐसा। हार्दिक, इज इट, कैन यू, आर यू एबल टू से? सर वो एक्सेस देना एक बार। एक्सेस इसमें चेंज रोल टू अटेंडी, ये होस्ट एक्सेस दे सकते हैं। प्रीतीश यू देयर? ठीक है, एक बार Yeah, आप, Vipul, I have given the access. या Yeah, Hardik. हार्दिक, कैन यू ट्राई वंस? ठीक है, हार्दिक के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके हार्दिक, यू कैन स्टॉप शेयरिंग। सर है ना इसके अंदर ये जो है ना 15+15 जैसे अगर इसमें डालते हैं अच्छा तो अच्छा अच्छा, हाँ उसमें तो वो आपने वो कोड्स यूज किया ना, कोड्स हटा दो। ओके कोड्स यूज नहीं करने हैं। नहीं नहीं, दोबारा से नए लाइन में लिखो, स्पेस मत दो प्रिंट के बाद। ओके वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट एक जनरल स्पेस यूज नहीं करते, लाइक ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस भी दोगे तो, बट कई बार कोड में एरर फाइंड आउट करने में, जो आपका कोड बहुत बड़ा, लाइक आप 100-200 लाइन का कोड लिखते हो, तो इन दैट केस डीबगिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इस वजह से उसको थोड़ा अवॉइड कर। ठीक है, ओके कब कोड देना है कब कोड नहीं देना मैं बताता हूँ अभी, ठीक है? ओके सर। ठीक है, ठीक है, आप स्टॉप शेयर करो तो एक बार। ठीक है, नीति कैन यू ट्राई वंस अगेन? ओके सर। उसको सेलेक्ट तो करो। सर वो वही आ रहा है। एरर करके आ रहा है कुछ? हाँ, अच्छा स्क्रीन चलो, से। कोई अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपको इंस्ट्रक्ट करता हूँ, आप बस फॉलो करो। आप अभी क्या, लाइक आपका पाइथन आईडीएल इंस्टॉल नहीं हुआ है, राइट? उसमें भी कुछ डीएनएस का कुछ इशू आ रहा था,
मैं एक बार फिर से ट्राई करती हूँ। नहीं हुआ ना? चलिए कोई बात नहीं, मैं नीति और आलिम आलमीन, राइट? ठीक है, कुछ लोगों का इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। हमारे पास और भी सॉल्यूशंस हैं, राइट? वी हैव सम अदर सॉल्यूशंस एज वेल, राइट? ऐसा नहीं है कि दिस इज द डेड एंड, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? दिस इज अभी मैं आपको बताता हूँ हमारे पास क्या सॉल्यूशन है। सो यहाँ पे जो हमने पहले आपको कोड समझा दूँ, ठीक? तो देखो, हियर वी रोट सम कैरेक्टर्स, ठीक? जब हमने कैरेक्टर्स लिखा है तो उसे कोट्स में लिखा है, ठीक है? जब कैरेक्टर्स नहीं लिखा है, नंबर है, तो फिर वो कोट्स में नहीं है। अब फॉर एग्जांपल जिनका ये एग्जीक्यूट हो रहा है उनका हो रहा है, लाइक अगर नहीं एग्जीक्यूट हो रहा तो आप मुझे स्क्रीन से करके बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प भी कर सकता हूँ। इन केस कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, आप स्क्रीन में शेयर नहीं कर पा रहे हो, इन केस किसी कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, इन केस ये भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो हम तो टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा इसमें आप भी नहीं कर सकते, कि आपको भी सीखना है टू लर्न समथिंग, राइट? सो व्हाट द अदर सॉल्यूशन, ठीक है? द अदर सॉल्यूशन इज यूजिंग अ टूल विच इज कॉल्ड क्लाउड बेस्ड टूल, ठीक है? कोडिंग के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं मैं। एक क्लाउड बेस्ड टूल होता है, ठीक है? क्लाउड बेस्ड टूल, राइट, फॉर पाइथन कोडिंग, ठीक है? अब क्लाउड बेस्ड टूल का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट, नो इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड, ठीक है? जैसे होता क्या है कि जनरली व्हेन वी परचेज अ सिस्टम, व्हाट वी डू, वी इंस्टॉल, द वेरी फर्स्ट थिंग वी इंस्टॉल इज एंटीवायरस, राइट? सबसे पहले सिस्टम लेके हम क्या इंस्टॉल करते हैं? एंटीवायरस, एंड दैट बिकम्स द बिगेस्ट एनिमी फॉर अ डेवलपर, राइट? एक डेवलपर के लिए बिगेस्ट एनिमी इज लाइक, यू नो, इट्स लाइक when you are going to be a developer, the thing that you have to avoid is what? Antivirus. इसलिए मैक्सिमम केसेस में लोग लिनक्स प्रेफर करते हैं। अगर आप विंडोज भी यूज कर रहे हो तो नाउअडेज विंडोज डोंट नीड एनी एंटीवायरस, विंडोज इज सो गुड, ओके, दैट इट इज हैविंग इट्स ओन डिफेंडर एंड ऑल, ओके? सो अलग से आपको मैक कैफे और ये सब यूज करने की जरूरत नहीं है। एंटीवायरस क्या करता है कि बहुत सारे आप जो फाइल्स होते हैं जिनको आपको यूज करना है डेवलपमेंट के लिए, एंटीवायरस बेसिकली ब्लॉक्स देम, okay, considering that is a kind of some virus or something like that, okay? So antivirus, anti malware, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि, या फिर सिस्टम के रैम कैपेसिटी, okay, the RAM capacity of the system, there are so many things are there which are the limitations in our system, ठीक है? So we can go for cloud based tool for Python coding in which we don't need any installation, हमें अपने सिस्टम में कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है, we are not required to install a single software into our system, right? Right, so what are the tools? These are basically code will be executed through servers, ठीक है? code will be executed through what? Servers. What it means? It means like मैंने अभी यहाँ पे कुछ कोड लिखा, इस कोड को किसने एग्जीक्यूट किया? मेरे सिस्टम ने एग्जीक्यूट किया, राइट? I just wrote some code over here. Who executed this code? My system executed this code and I got the result, ठीक है? यहाँ पे किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, राइट? बट व्हेन यू आर यूजिंग क्लाउड बेस्ड टूल, राइट, योर सिस्टम विल नॉट एग्जीक्यूट योर कोड, आपका सिस्टम आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय व्हाट? सर्वर्स। सर्वर्स क्या होते हैं? सर्वर्स आर द ह्यूज सिस्टम्स, ओके? सर्वर्स बेसिकली आर द, जस्ट लाइक योर सिस्टम, वी हैव ए स्मॉल सिस्टम, हमारे पास एक स्मॉल छोटा छोटा पीसी है, राइट? बट यू नो, सर्वर्स आर बेसिकली ह्यूज सिस्टम्स,
okay, huge systems which are created somewhere in remote location, जैसे गूगल का सर्वर है, राइट, इंडिया में गूगल के 2 सर्वर्स हैं बेसिकली, राइट, ऐसे ही अमेजन के सर्वर्स हैं, right? So, kind of there are big giants like Google, Amazon, they created their servers, okay, and having a huge system, okay, so they can process your code as well, ठीक है, वो अपने कोड को, आपके कोड को भी प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक। कुछ फेमस क्लाउड बेस्ड टूल हैं, ओके, पॉपुलर क्लाउड बेस्ड टूल, ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहला गूगल कोलैब, ओके, नेक्स्ट Amazon, या फिर आप कह लो इसे AWS सेज मेकर, ठीक है, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एजियो, सो एजियोर के अंदर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें आप नोटबुक वगैरह यूज कर सकते हो इजिली, जुपिटर नोटबुक जो होते हैं वो सब, राइट। तो अभी क्या है कि these are the cloud based tool given by big giants, big companies, ठीक है, so sometimes they are free, sometimes they are paid, okay। अभी ये sometimes कैसे decide होता है? See, for basic use cases, okay, like Google Colab and Microsoft gives some amount of free, with a limited use case you can use them free, okay, but SageMaker is completely paid, क्योंकि अभी आप क्या करोगे, आप दूसरे का सिस्टम यूज कर रहे हो, जब आप दूसरे का सिस्टम यूज कर रहे हो अपने कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आपसे तो पैसे ले सकता है ना वो, ठीक है, क्योंकि सिस्टम को सेटअप करने में उसके पैसे लगे हैं, राइट, सेम थिंग। सो हियर इफ यू आर यूजिंग अ क्लाउड बेस्ड टूल फॉर बेसिक यूज केसेस, इट इज फ्री, AWS is not free at all, okay, but Google Colab is free, okay। Best part is what? I'll show you the best part of it, okay। आपको कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना सिस्टम में, you have to just open Google, I guess everyone can open Google into their system, ठीक है। अब Google ओपन करने के लिए कुछ तो इंस्टॉलेशन नहीं चाहिए, राइट, you have to just search over here Colab, ठीक है। The very first option that you get, colab.research.google.com, ठीक है। See, those who can't install, जिनका अब तक इंस्टॉल नहीं हुआ, and they are facing problem with the installation, later on whenever you are comfortable in sharing the screen, जब भी ये सब चीजें आप अभी आप फोन से ज्वाइन कर रहे हो, ठीक, तो फोन से ज्वाइन करके भी आलमीन, राइट, आपने फोन से ज्वाइन किया तो फोन से ज्वाइन करके आप स्क्रीन से नहीं कर सकते ऑब्वियसली, और कैमरे वगैरह से शो करोगे, दैट विल नॉट हेल्प मी, है ना। तो जब भी आप प्रॉपरली ज्वाइन करोगे उस समय वापस से इसको इंस्टॉलेशन वगैरह सॉर्ट आउट कर लेंगे, जब नीति का प्रॉपरली प्रॉब्लम नहीं आएगी इंस्टॉलेशन में, स्क्रीन शेयरिंग में, तो सॉर्ट आउट कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स, बट राइट नाउ अभी आप खाली तो बैठ नहीं सकते, सो देयर शुड बी सम सॉल्यूशन, है ना। तो द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाट? कोलैब, एवरीवन, दिस इज फॉर एवरीवन, राइट, आप सब लोग इसे ओपन करोगे, जब गूगल कोलैब ओपन करोगे, दिस इज colab.research.google.com, right, you required only one thing which is called Gmail ID, ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने जीमेल आईडी से लॉग इन कर लेना, राइट, लाइक आई जस्ट लॉग्ड इन विथ माई जीमेल आईडी, यू ऑल्सो नीड टू लॉग इन विथ योर ओन जीमेल आईडी, है ना, आपको बस अपने जीमेल आईडी से यहाँ लॉग इन कर लेना है, ठीक है, क्योंकि वॉट एवर फाइल दैट यू क्रिएट विल बी सेव्ड ऑन योर गूगल ड्राइव, ठीक। अब यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, आपको अगर समय मिले तो आप पढ़ लेना कि भाई क्या चीज है ये, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या है ये, ठीक। यू हैव टू गो टू फाइल, okay, first is what? First you have to open colab.research.google.com, I'm sharing this link in the chat, okay, चलिए कोई बात नहीं, पहले इसको कर लेते हैं, राइट, ठीक है, आपको मैंने शेयर कर दिया चैट में लिंक,
जब आप इसे ओपन करोगे यू कैन इजिली लॉग इन विथ योर गूगल अकाउंट, जीमेल से आप लॉग इन कर लो, फिर आपको क्लिक करना है फाइल पे एंड देन न्यू नोटबुक। ठीक है, तो थोड़ा समय लेगा लोड होने में, डिपेंडिंग अपॉन इंटरनेट स्पीड एंड अदर थिंग्स। पहले तो बहुत जल्दी होता था बट अब काफी लोग इसे यूज कर रहे हैं तो दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग लिटिल। ठीक है, यू गेट अ इंटरफेस लाइक दिस। अब ये क्या है? दिस इज जस्ट अ पाइथन, it will work like your Python code editor. Print hello world. I'll execute by clicking on this play button. ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिख करके आ रहा है, कनेक्टिंग। कहाँ कनेक्ट हो रहा है ये? टू द गूगल सर्वर। इट विल टेक हार्डली 30 to 50 seconds to connect. अब ये कनेक्ट हो गया। जैसे ये कनेक्ट हुआ, इट हैड गिवन, गूगल हैड गिवन मी दिस मच अमाउंट ऑफ रैम। ये फ्री यूज के लिए दिया गया है। देखिए मैंने इस पे क्लिक किया तो मुझे क्या मिला, गूगल हैड गिवन मी लाइक यू कैन यूज 12.7 GB ऑफ रैम एंड 107 GB ऑफ स्पेस डेटा रखने के लिए। ठीक है, इतना स्पेस फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, जिसमें 26.3 GB यूज हो गया। राइट, सो गूगल हैड गिवन मी दिस मच स्पेस टू स्टोर द डेटा एंड दिस मच इज द रैम कैपेबिलिटी गिवन टू मी। Right, I can do what? If I want more, I can upgrade to Colab Pro. If I want more, I can upgrade to Colab Pro. But as of now, this much is enough for me. Okay, मुझे इससे ज्यादा की नीड नहीं है। Okay, so it is using what? The Google server. Okay, I can give the code over here. I can write the program over here. Okay, it will execute and give me the result over here. आपको फिर से शो कर देता हूँ। जब ओपन करोगे यू विल गेट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। यू हैव टू राइट द इंस्ट्रक्शन ओवर हियर, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, राइट, and then I execute. There are two ways of executing. You can click on this play button or you can use shift plus enter. So when you use shift plus enter, you will get the result. Now I want everyone to do this thing, right? प्लीज आप इसे करो क्योंकि इसमें कुछ भी इंस्टॉलेशन नहीं है। तो आपके सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम किसी भी वजह से, टेक्निकल इश्यूज की वजह से इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ भी रही है, सो दिस विल नॉट बी अफेक्टेड। यहाँ पे ये सभी का एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट? हाँ कनिष्क, आपको भी इसे यूज करना है, आप भी इसे ओपन करो और यूज कर। मैं अभी बताऊंगा कि इसे क्यों यूज करना है और इस और व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दिस थिंग एंड पाइथन सेल। Okay, it works for Python only or for any other language? See, अभी तो ये Python और एक और लैंग्वेज R को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे अगर आप सेटिंग्स में जाते हो, नोटबुक सेटिंग्स, ठीक है, तो यहाँ पे आप Python और R ये चेंज कर सकते हो कि Python प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और R प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, टू थिंग्स दैट इट सपोर्ट्स, राइट? हाँ, right, Gorans. If you have installed Python, then also you have to use it. Please use it. I'll tell you why. ठीक है, आप इसे यूज करो, ओपन करो और इसे यूज करो प्लीज। जस्ट कंफर्म, I'll give 5 minutes time to everyone to open Colab, click on file, new notebook, and execute this one line of code. Just execute it. I'll tell you why to use this thing, even if you have Python shell installed or Python ideally installed, right?
Let's sort of thank you. Almin, now it's working for you. Okay, take your time, no worry. Take your time. Everyone can take their time, right? 5 minutes, 7 minutes. We are starting, right? So at the start, it may take few. It may seems to be very slow, but once we started, once we are done with the interface, एक बार हमें interface समझ में आ जाता है, environment समझ में आ जाता है, उसके बाद की चीजें जो होती है वो बहुत इजी हो जाती हैं, राइट? दिस इज द टफेस्ट थिंग, हेलो वर्ल्ड। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हो, राइट? वंस यू प्रिंट हेलो वर्ल्ड 50% डन, ओके? 50% प्रोग्राम और 50% लैंग्वेज आपने वहीं सीख ली, राइट? अब से 50% बचा है। दिस प्रिंट हेलो वर्ल्ड, आप दिस इज द रूल दैट यू कैन कीप इन माइंड, ओके? फॉर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? इन फ्यूचर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जाते हो तो वंस यू प्रिंटेड हेलो वर्ल्ड, दैट मींस 50% ऑफ योर लर्निंग इज डन देयर ओनली, राइट? सो जस्ट do this thing, okay? Once we are clear with the environment, we will clear with these things, okay? Thereafter we will move little faster. Okay, while writing the code, it is asking 10-second approach to give the output. Okay, good. Kanisk had raised a very good point. This is just for first line of code. ठीक है, आपने जो पहला लाइन लिखा तो ये 10 सेकेंड लिया क्योंकि एट दैट टाइम इट वाज कनेक्टिंग विद द रैम एंड डिस्क, ठीक है? ये कनेक्ट हो रहा था. नाउ इफ यू राइट द एनी अदर इंस्ट्रक्शन ओवर हियर, लाइक मैं आप कुछ और देता हूं, 9 मल्टीप्लाइड बाय 2, एंड देन इफ आई एग्जीक्यूट इट, कैसे एग्जीक्यूट करूंगा? प्ले बटन या फिर शिफ्ट प्लस एंटर, सो इट विल रन लिटिल क्विकर, ये फास्ट एग्जीक्यूट करेगा. लेटर ऑन आप आइडेंटिफाई करोगे कि वट एवर स्पीड योर सिस्टम इज शोइंग, इट विल ऑपरेट फास्टर देन योर सिस्टम. Nidhi, is it working for you now? Almin, is it working for you now? यहाँ पे आप देखो. Now let's see the difference between the Python shell. Next line के लिए you can just click on code. यहाँ पे आप ऑप्शन देखो कोड का, अब कोड पे क्लिक करते जाओ. Like this is a cell, code cell, right? You will have a multiple code cell that will be created. This is a code cell, right? यहाँ पे कोड है लिखा हुआ. Okay. Now just see the difference between your conventional tool and this tool. ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कन्वेंशनल टूल के अंदर क्या होता है कि आप अगर कोड में कुछ भी चीज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4-5 लाइन का कोड है, ठीक है? अब 4-5 लाइन के कोड के बाद मैंने एक लाइन यहाँ पे और ऐड किया, लाइक लेट्स सी आई जस्ट एडेड वन लाइन ओवर हियर, something, just some random thing I added and I executed it. ठीक है? Now I'll execute it. Just try to understand. इसको यूज नहीं करना है, but you need to know. Okay? So what you can see, every time, ठीक है, जब भी आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, every time it is executing from the very first line. पहली बार इतना कोड एग्जीक्यूट किया, this is what's shown. Second time I just added this new line
still it executed all the code. इसने पूरा कोड एग्जीक्यूट किया, राइट? सो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि व्हेन सपोज लाइक जब आपका कोड काफी इंक्रीज हो जाएगा, व्हेन यू हैव अ बिगर लेंथ ऑफ कोड, राइट? आपका कोड सपोज यू हैड रिटन 100 लाइंस ऑफ कोड, ठीक है, उसमें बीच में आप कुछ चेंज कर रहे हो, ठीक है, देन यू वांट टू टेस्ट इट, सो टेस्टिंग प्रोसेस विल बी स्लोअर, क्योंकि इट विल एग्जीक्यूट ऑल 100 लाइंस। आपने बीच में कुछ चेंज किया और एक छोटा सा टेस्ट करना चाहते हो, तो टेस्टिंग प्रोसेस विल बी स्लोअर because it will execute every time complete 100 lines. But notebook में क्या है? This is a notebook you can say which Google Colab is providing. Here suppose I write a code, right? Hello world, here यहाँ पे मैंने कुछ और लिख दिया, print Python learning class, ऐसे कुछ लिख दिया मैंने, right? इधर लिख दिया print, ऐसे कुछ लिख दिया, ठीक है, just some random thing written, right? And I executed it, ठीक है। जब मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, आई गॉट सम रिजल्ट, ठीक है। नाउ आई कैन यूज नेक्स्ट सेल टू राइट सम अदर थिंग, राइट? नाउ नेक्स्ट सेल के अंदर अगर मैं कुछ एग्जीक्यूट करता हूं, तो ये दिस इज नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट द फर्स्ट सेल, राइट? अभी इस सेल में मैंने कुछ एग्जीक्यूट किया, सो इट विल नॉट एग्जीक्यूट दिस थिंग, राइट? हियर आई कैन क्रिएट द कोड ब्रिक बाय ब्रिक, स्मॉल पोर्शन में पूरा का पूरा आई कैन राइट द कंप्लीट एप्लीकेशन, पूरे एप्लीकेशन को या पूरे कोड को मैं स्मॉल ब्रिक फॉर्म में क्रिएट कर सकता हूं। सो हाउ इट विल हेल्प अस? इट विल हेल्प अस इन एरर हैंडलिंग, क्योंकि जब आप कोड लिखोगे यू विल गेट अ लॉट ऑफ एरर्स, ठीक है। और कोडिंग के अंदर इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू हैंडल द एरर्स। मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि हाउ यू कैन हैंडल द एरर्स, ठीक है। आप एरर्स को कैसे डिबग कर सकते हो, एंड आफ्टर डिबगिंग हाउ कैन यू फिक्स इट, ठीक है। सो कन्वेंशनल प्रोसेस में एरर डिबगिंग विल बी लिटिल डिफिकल्ट, ठीक है। जो कन्वेंशनल प्रोसेस है इसमें एरर डिबगिंग डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ लाइंस ऑफ कोड, 100-200 लाइंस ऑफ कोड, और वहां पे बीच में कहीं एरर आया तो आप उसे ठीक करके और दोबारा एग्जीक्यूट करोगे, कंप्लीट कोड एग्जीक्यूट होगा, एंड दोबारा से अगर कुछ आया एरर, फिर आपको कंप्लीट कोड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। बट यहाँ क्या है कि आप एक स्मॉल पोर्शन के पार्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो और सिर्फ उसी को सही करके उसको चेक कर सकते हो, तो आपकी वर्किंग फास्ट हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स सी आई रोट ओवर समथिंग, राइट? I will just write over here, my name is Vipul, ठीक है, ठीक है। अब इसमें कितने लेगा कोड है? 1 2 3 4 5 6, राइट? अब मुझे कुछ चेंजेस करना है इस लाइन में, सो आई कैन मेक चेंज राइट ओवर हियर, ओके। इट विल नॉट एग्जीक्यूट दिस वन, इट विल नॉट एग्जीक्यूट दिस वन, these things will remain as it is, only it will execute this cell, right? This was asked like एक बार एक इंटरव्यू में इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, एंड द इंटरव्यू गेट कंफ्यूज्ड ऑन इट, ओके। द क्वेश्चन वाज कि नोटबुक, इसे नोटबुक कहते हैं, ठीक है। नोटबुक और कन्वेंशनल पाइथन सेल में क्या डिफरेंस है, राइट? अगर नोटबुक का यूज करके आप पाइथन कोडिंग करते हो और कन्वेंशनल पाइथन सेल का यूज करके आप कोडिंग करते हो, या कन्वेंशनल पाइथन कोड एडिटर का यूज करते हो, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। इन नोटबुक you can create the code in small fractions, okay? You can make the changes in small fractions, right? Brick by brick, right? And if you have to debug the error, you can make the changes and identify the error and fix it for a small portion of the code, okay? So processing can be faster, but in conventional Python tool, conventional Python code editor, all the code will run at once. आप कुछ भी चेंज करते हो, अगर यहाँ पे आप हेलो गूगल की जगह हेलो वर्ल्ड कर देते हो,
ठीक है, और चेंज करके आप दोबारा रन करते हो, ठीक है, तो इट विल डू व्हाट, इट विल रन द कंप्लीट कोड। ठीक है, ये सिर्फ इस लाइन को नहीं रन एग्जीक्यूट करेगा, ये कंप्लीट कोड को एग्जीक्यूट करेगा। सो द थिंग इज रिसोर्स रिक्वायरमेंट इज हायर, राइट, आपको ज्यादा रिसोर्स रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी, यू नीड हायर मोर प्रोसेसिंग टाइम, ओके, प्रोसेसिंग टाइम आपको ज्यादा चाहिए, राइट, सो दैट्स व्हाई दिस थिंग इज मोर प्रेफर्ड नाउअडेज। ओके, मेनी पीपल आर यूजिंग जुपिटर नोटबुक। मैं अभी जुपिटर नोटबुक से बहुत लोग कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। ओके, आई विल कम टू जुपिटर नोटबुक, बट यू नो आई I want, as many of us are very beginner, right? So I want you to be settled down, get properly, kind of known to the environment. ठीक है, आपको पहले पूरा इन्वायरमेंट समझ में आ जाए, कोडिंग थोड़ी बहुत बेसिक बेसिक समझ में आ जाए, फिर मैं आपको जुपिटर नोटबुक और बाकी के सारे टूल्स है, दुनिया भर के टूल्स है पाइथन के अंदर, उन सब के बारे में एक एक करके बताऊंगा। बट I can see many of us are very much beginners, so I don't want to give much stress to you right now. ठीक है, आपको पहले से जुपिटर नोटबुक पता है, आप यूज कर रहे हो, प्लीज गो अहेड। दिस इज ऑल्सो अ नोटबुक, दिस इज अ कोलैब नोटबुक। ठीक है, बेसिक बेसिक बता दो, कोलैब नोटबुक और जुपिटर नोटबुक एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली, ओके, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कोलैब नोटबुक आपका ऑनलाइन चलता है, ये गूगल के सर्वर पे चल रहा है, जुपिटर नोटबुक आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। कोलैब नोटबुक इज अ क्लाउड टूल। ठीक है, कोलैब नोटबुक क्या है, देखिए मैं लिख देता हूं जिससे कि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। दो टूल है जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं, वन है कोलैब नोटबुक, जिसे गूगल कोलैब भी कहते हैं। ठीक है, ये क्लाउड है, क्लाउड टूल है, मतलब ये गूगल के सर्वर पे रन हो रहा है, आप यहाँ से कोड लिख रहे हो, गूगल सर्वर पे एग्जीक्यूट होके आपको आउटपुट मिल रहा है। जुपिटर नोटबुक, दिस इज योर ऑफलाइन टूल, ऑफलाइन टूल रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन, इसे आपको अपने सिस्टम में खुद इंस्टॉल करना पड़ता है। कैसे इंस्टॉल करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, तो दैट आई विल ऑब्वियसली टेल यू हियर, नो इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड, यहाँ पे किसी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, राइट, सो दिस इज इजियर कंपेरेटिवली, राइट, मुझे अपने सिस्टम में कुछ भी स्टोर नहीं करना, राइट, what my system is, that doesn't matter, my system is slow, my system is fast, that doesn't matter, right, मेरे सिस्टम में एंटीवायरस है, एंटी मालवेयर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, सो दिस इज कंपेरेटिवली easier, right, this thing mostly depending upon your system configuration. ठीक है, so if you have already installed and you know how to use it, please go ahead. If you don't install, if you had not installed, आपने इंस्टॉल नहीं किया, आपको कोई आइडिया नहीं है, so फिलहाल आप परेशान ना हो, let's start with Google Colab, have some knowledge on Python, और उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस करते हैं इसका, राइट, दोनों एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली कोई डिफरेंस नहीं है जुपिटर नोटबुक में और कोलैब नोटबुक में, राइट, बस एक क्लाउड है, एक ऑफलाइन है, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, अब आते हैं पाइथन के बारे में, समझते हैं कि पाइथन में हमें कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, सो टू लर्न पाइथन, सी यहाँ पे आई हैव टू थिंग्स, कोड एंड टेक्स्ट। कोड आई कैन यूज फॉर कोडिंग, टेक्स्ट आई कैन यूज फॉर राइटिंग द नोट्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे आके क्या किया देखिए, जस्ट अ मिनट, हियर आई क्लिक्ड व्हाट, टेक्स्ट। ठीक है, हियर आई विल क्लिक व्हाट, टेक्स्ट, सो इट विल गिव मी a space to write the notes. You don't have to write the notes, प्लीज आप नोट मत लिखो। ठीक है, क्यों नहीं लिखो, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपसे समझने की कोशिश करो, प्लीज कंसंट्रेट, जस्ट फोकस ऑन लर्निंग,
डोंट वरी अबाउट द नोट्स, राइट, क्योंकि नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो पाइथन, पाइथन क्या है, पाइथन के बारे में हमने कल डिस्कशन किया था, पाइथन ही जो ओपन सोर्स टूल ये सब वो सब, राइट। अब लर्निंग पाइथन हम कहाँ से शुरू करेंगे और पहले क्या सीखना है, ठीक है। सो पाइथन में फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू लर्न इज वेरिएबल्स एंड वैल्यूज, okay. Second thing we have to learn is what data types, right? And third thing we have to learn is what operators, okay. Fourth thing we have to learn what conditional programming, and fifth thing we have to learn is what loops, okay. So these are what basic Python. अभी basic पे डिस्कशन करते हैं. Basic, after basic we'll go for intermediate Python, and after intermediate Python we'll go for advanced Python. Okay. Now the question is, I told you I'll share the notes with you. Okay. How can I share the notes? See, I'll give it a name over here. Function up. Okay. What's the date today? 21 January. Okay. Python class 1. ठीक है. Now I'll click on this share button. ठीक है. When I click on share button, that's the best part I can see in this collab. ठीक है, क्योंकि in real time I can share the code with you. I checked what anyone with the link. That means if I share the link, okay, मैं अभी आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ. In real time you can do what? You can access the code that I am writing. ठीक है, मैंने यहाँ पे अब मैं जो कुछ भी लिखूंगा, नोट्स लिखूंगा, ये लिखूंगा, आपको रियल टाइम मिल जाएगा. इसलिए मैंने आपसे बोला आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. मैं यहाँ जब नोट्स वगैरह लिखूं तो आपको वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लिखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, राइट. योर ब्रेन विल फंक्शन इन टू वेज. यू विल स्टार्ट राइटिंग, यू विल स्किप अंडरस्टैंडिंग. सो जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग. नोट्स वगैरह मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो यहाँ लिखूंगा आपको वो मिल जाएगा रियल टाइम के अंदर. ठीक है, ऐसा नहीं कि आज लिख रहा हूं तो 2 दिन बाद मिल रहा है, अभी के भी मिल जाएगा, राइट. आपको बस वो लिंक रिफ्रेश करते रहना है, राइट. ठीक है, तो अब बात करते हैं, हमें बेसिक पाइथन समझना है. बेसिक पाइथन के अंदर द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज वेरिएबल्स एंड वैल्यूज, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विथ वेरिएबल्स एंड वैल्यूज, राइट. ये क्या चीज होता है? सो लेट्स सी, आई एम राइटिंग समथिंग ओवर हियर, नेम. ठीक है, दिस इज व्हाट, जस्ट अ वर्ड. ठीक है. Now in this word I want to store something, like in the name I am storing my name. Okay, so in this case the thing that you can see on the left hand side is variable, and this is what value. Okay, ये क्या है? variable है, और ये क्या है? value है, right. So basically a variable is something which can stores a value, ठीक है, and make it reusable. Reusable means what? नेक्स्ट टाइम अगर मुझे इस नाम को यूज करना है तो मुझे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है. देखिए, लाइक फॉर एग्जांपल आई हैव टू से हेलो टू समवन, द स्टोर्ड नेम. सो व्हाट आई विल डू? प्रिंट हेलो. अभी हेलो लिखूंगा तो सिर्फ ये हेलो प्रिंट करेगा, है ना. हेलो के साथ अगर मैं नेम लिखूंगा तो ये क्या प्रिंट करेगा? हेलो नेम प्रिंट कर रहा है. हेलो विपुल तो प्रिंट नहीं कर रहा, है ना. क्यों नहीं प्रिंट कर रहा? क्योंकि दिस इज विद इन द कोट्स. ओके, कोट्स आर समथिंग व्हिच रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रिंग और अ कैरेक्टर. ओके, सो दिस इज फिक्स्ड. ठीक है, ये क्या है? ये फिक्स्ड है. फिक्स्ड मतलब ये एक कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती. हेलो नेम, बट इफ आई विल पुट कोट्स ओवर हियर, मैंने हेलो को फिक्स कर दिया, ठीक है, और नेम को मैंने फिक्स नहीं किया.
ठीक है, and then there is a comma between these two guys. Okay, I am saying this is fixed and this is variable. All right. So what variable does? Variable is something. Let me write the definition now. Variable stores a value and gives the power of reusability. Okay, it gives the power of reusability. Right, that means आप कुछ भी वैल्यू स्टोर करते हो आप उसे रीयूज कर सकते हो, अलग अलग तरीके से रीयूज कर सकते हो। जैसे अभी मुझे नेम को सिर्फ नेम यूज करना है, मुझे नेम को हेलो करना है, मुझे नेम को कुछ और तरीके से यूज करना है। माय नेम इज, माय नेम इज कॉमा करके नेम कर दिया। अब नेम को मैंने तीन तरीके से यूज कर लिया तो इसलिए रीयूजेबिलिटी। ठीक है, नेम को चेंज करना है, ठीक है चेंज कर देते हैं। ओके, लाइक रमन कर दिया। सो नेम इफ चेंज, आई सो सिर्फ एक जगह चेंज किया ना, राइट, एवरीथिंग इज चेंज। सो दिस इज योर पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल इफ यू डोंट यूज वेरिएबल, अगर आप यहाँ पे सीधे नेम लिखते हो, जो भी नाम है आप नाम यूज करते हो, सो आई हैव टू मेक चेंजेस थ्री प्लेसेस। आपको इधर भी चेंज करना होगा, इधर भी करना होगा, इधर भी करना होगा, बट सिंस यू आर स्टोरिंग द नेम इनटू अ वेरिएबल नेम, you just make one change, right, and you re-execute these things, everything change। ठीक है, आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे एक तरीके से as you have stored the value over here, okay, and you are using name, so if in case the name value is changed, right, all three things changes। आपको तीन जगह चेंज नहीं करना है, right, like for example here I have to make the change, like let's say I'll make it Arun। ठीक है, so here it is changed obviously, and if I execute this one, this will also change। all right, अब there is one more confusion कि कहाँ पे डबल कोट्स यूज करें, कहाँ पे सिंगल कोट्स यूज करें, कौन बताएगा? देखिए, पाइथन के अंदर डबल कोट सिंगल कोट एक ही बात है। ठीक है, आप डबल कोट यूज करो सिंगल कोट यूज करो, पाइथन कंसीडर्स देम सेम, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, पाइथन फॉर पाइथन डबल कोट सिंगल कोट सेम, you can use any one of them, no need to give stress on it if it is a नॉन न्यूमेरिक वैल्यू, अगर ये नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है तो। सो काइंडली एग्जीक्यूट एंड लेट मी नो इफ इट रन्स फॉर एवरीवन और नॉट। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीज नहीं रन हो रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैंने आपके साथ लिंक शेयर किया हुआ है अपने फाइल का, आप उस लिंक को ओपन करो, रिफ्रेश करो, you'll get the same code that I wrote over here। इन केस कोई प्रॉब्लम आती है, सपोज कर आप कोड लिख रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम आई, just open the link that I shared, right, you'll get the same code and execute it। Let me know once it is done, I'll wait for 5 minutes।
Okay, for Hardik it is done. So what's the conclusion? It is a variable. A variable can store any value. Okay, and what will it do after storing a value? It can be reused. Okay, it can be reused throughout the program. आपके पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल में आप कोई वैल्यू यू स्टोर कर सकते हो और स्टोर करने के बाद आप उसे रीयूज कर सकते हो थ्रू आउट द प्रोग्राम. Everyone? Is there anyone who can't execute it? For Anil, it is done. All right, guys. So, what are okay? Fine. Nice, nice, nice. Okay. Now, when you talk about these variables, you can store variable in three ways. ठीक है? जैसे ये पहला तरीका है, एक वेरिएबल एक वैल्यू. नाउ लेट्स से आई हैव टू क्रिएट थ्री वेरिएबल्स. ठीक है? So three variables I can create like this: name, age, okay, and suppose city. Okay. So इधर मैं कुछ तो नेम स्टोर कर देता हूँ राज फॉर एग्जांपल. ठीक है. एज इधर स्टोर कर देता हूँ 23. सिटी कुछ तो स्टोर कर देता हूँ लेट्स से जयपुर. ठीक है. And thereafter there are three variables, right? And all three variables I can print over here: name, comma, age, comma, city. Okay. This is how I can create three variables with three values. There is one more way. What is that? Name, comma, age, comma, city. Okay. Three variables in a row, and then I can just store the value. Like suppose Ajay 29. Okay. Something like that. Okay. Now let's see print name, age, and then city. Okay. Right. Right. For numeric, we don't need quotes. This is a very good point that you find, Abhishek. Thanks a lot. Okay. I want some of you to identify this thing. Okay. For numeric value, quotes are not required. Otherwise, it will not be numeric. Okay. So numeric value. So you can see over here, we can define the variables like this one by one. Okay. But later on, if you are having a bigger, like suppose you have a very so many lines of code, then you can also define the variables in a row. Like you are having three variables, so three variables and three values. But if suppose you define three variables and trying to define only two values, it will generate an error. See, it is generating an error. It is saying that you have defined three variables, so there should be three values. Okay, so three variables, three values. All right. Okay, so one way, two way, the third way is what? Let's say
Okay, let's say city 1 equals to city 2 equals to city 3 equals to Mumbai. So here we have three variables having the same value. Okay, in case if you are going to create multiple variables with same value, okay, then you can use like this. Okay, so these are the three ways how you find the variable declaration. This is your first way of declaring a variable, right? I'll write the comment over here. Multiple variables in multiple lines. Okay, thereafter, here is what? Multiple variables with different values declared in one line. Okay, here. Multiple variables with one value. No, Ganesh, it will not work. Okay, because here it is just multiple variables, but all are are we using equal to sign? So it means one is all of them are same. The value should be same, right? In what situation it is useful? Situation is like, this thing we don't use much. Okay, generally we use this kind of things like where one variable holding one value. Okay, multiple variables with one value, generally we don't use it more much over here. But in case what I can say, mm, let's just suppose there is a situation where you have to kind of create a backend, okay, backend for a data, right? So in that case, like suppose you created over here a city 1 equal to city 2 equal to city 3, right? Later on, if you're making some changes, okay, like suppose you have to just make the change in city 1, okay, so city 1 you changed to, okay, city 1 you changed to what? Just a minute. Okay, city 1 you just change to suppose Nagpur, राइट, आपने सिटी 1 की वैल्यू चेंज कर दी नागपुर में, ठीक है? तो now you want to see what is the original value, like initially city की वैल्यू क्या थी? So initial city की वैल्यू is somewhere stored in what? In one of your variable called city 2, ठीक है? city 2 ये मुंबई है. So in case this kind of situation happen like backend, okay, या फिर आप कह सकते हो एक
something you want to store in the back of your memory, है ना? So you can use this multiple variable, like एक variable की value continuously change हो रही है throughout the program, okay, throughout the program by any means the value is changing, but you want to keep somewhere in the backend that what was the first value, ठीक है, पहली value क्या थी, so that in such cases it can be used. Understood? Please do it, everyone. I'll give you 2-3 minutes of time so that everyone can execute and check if any error, any problem, we can discuss and resolve. Okay, Kanishk is asking why city 2 is Mumbai, because this is declared first. ठीक है, ये पहले डिक्लेयर हुआ, सिटी 1 की वैल्यू हमने यहाँ पे चेंज की है, ठीक है, इसके बाद तो चेंज, इसके बाद हमने डिफाइन नहीं करा ना सिटी 1 इक्वल टू सिटी 2, ठीक है, तो दिस विल टेक द वैल्यू फ्रॉम हियर, राइट? अगर आप यहाँ पे ऐसे लिख देते हो, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, आपने इसे एग्जीक्यूट किया, ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपने यहाँ पे लिख दिया सिटी 2 इज इक्वल्स टू सिटी 1, ठीक है, ये आपने कर दिया, ठीक, आपने सिटी 2 को सिटी 1 की इक्वल कर दिया, अब आप इसे प्रिंट करो, नाउ सिटी 2 इज नागपुर, है ना, बट सिटी 3 रिमेन मुंबई, राइट? क्योंकि what you did first, you have declared all three having the same value, later on you change the value for city 1, okay, and that city 1 value you updated into city 2, okay, so that's why city 2 is changed, but city 3 you are not updating, ठीक है, जब तक आप अपडेट नहीं करोगे तो उसकी वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, तो आपने सिटी 3 की वैल्यू अपडेट नहीं की है, दैट्स व्हाई इट रिमेन्स मुंबई. Okay, in case if for someone anything is raising error, please let me know. You can also consult with the collab link that I'm sharing with you. Okay. I had shared a collab link with you. Kindly see. Done, guys?
Okay. Now let's see the next part. Data types, right? What are data types, right? Data types is like, types of data that Python programming language supports. Types of data. No, 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 no. That will not. Okay, I'll tell you, Kanis, okay? That Python programming language supports. Okay, this is a very good question actually. Kanisk asked, right? So I'll just share this question to you all. So before I explain it, right? He asked me, okay, rather than writing, okay, city 2 is equals to city 1, can we write city 1 is equals to city 2 and get the output as Nagpur? So this is not the way it will work, right? Here you are doing what? Okay, let's try to understand this whole process. Okay, we have city 1 value is equals to Mumbai from here. City 2 is also Mumbai and city 3 is also Mumbai. All right, all three guys are Mumbai. Okay, now you made city 1 as Nagpur. Okay, so city 1 is Nagpur, right? Now if you do what, city 1 is equals to city 2. City 1 is equals to, which you made already Nagpur, is equals to city 2. And what is city 2 right now? City 2 is still Mumbai. Okay, so city 1 value will be, instead of Nagpur, it will turn into Mumbai, because city 2 is still Mumbai, right? Okay, so let's see over here. If I will write city 1 is equals to city 2. Okay, so here what happened? This is declaration. I declared it. City 1 I made Nagpur, but later on I am again updating city 1 is equals to city 2. City 2 is what? Still Mumbai. Okay, so city 2 will remain Mumbai and it will also make city 1 as Mumbai, which was Nagpur. Right, so this value will be, like when you do simple mathematics as well, what you do, x is equals to 5. This is how you write the maths, right? In mathematics, right? You don't write like this. This is not the way we write, right? Is this correct? 5 is equals to x. This will not work, right? Are you getting a point? This will not work. Generally we use what? This process. Same thing over here. Okay, it's like the variable will be on the left hand side and the value can be on the right hand side. Okay, so here we have the variables and values. Okay, we stored a new value into the old variable. Okay, and here this is a variable, this is also a variable, but this variable is carrying a value which will be added into city 2. Is it clear, Kanisk? Okay, so types of data Python supports, Python programming language supports, right? So first of all, we need to understand that Python supports over here numerical data and non-numerical data. Okay, so in numerical we had seen over here what? We will see integer, okay, and float. Okay, and non-numerical we will see what? String.
Okay, this is the most basic, right? So let's try to understand. If I write over here, what should I write? Number of students. Number of students. So number of students can't be in decimal, right? This is what my variable. How many students do we have right now? It's like 18 over 16, right? Okay. So I'll store 16. Okay. And now if I will do what? I will print number of students. And thereafter I will print the type of type of this one. Type is what? Again, an inbuilt function which will check the type. It is what? It is saying integer. Int class int means what? The type is integer. Okay, the variable is what? Integer. It is holding an integer value. Right. Next, float. What is float? Let's say I'll do what? I'll store a value weight. Weight is equals to 67.9. Okay. Now I'll print weight. And again, I'll print the type of weight. Okay. Yeah, I'll repeat, Hardik, no worry. It is float. All right. Thereafter, I'll do what? I'll store over here name, or you can say, yeah, let's say name. Okay. So let's say name I'm storing Vipul Kumar. Okay, and then I'll print type. Oh, sorry, I'll print name, and later I will print type of name. Right. So I'll get what? String. So as of now, we had seen two types of data that Python can have. Okay. It is either numerical or non-numerical. Numerical data, if you see, will be declared without any quotes, just a number. In numerical, there will be again two types. It can be a decimal or it can be a non-decimal. Right. If it is non-decimal, Python consider it as an integer. Okay. What is integer? If there is a number declared without any decimal, that is integer. Okay. And if it is decimal containing value, it is a float. We call it, Python consider it as a float. Okay. We are not telling Python that it is integer, it is float, it is a string. हम Python को ये नहीं बता रहे कि ये integer है, ये string है, ये float है, right? Python is smart enough to identify. Python खुद ही identify कर ले रहा है, right? Here we are not telling it. We have just declared it, and Python say, oh, it is an integer. We have declared it. Python say, oh, it is a float. We have declared it. Python said, oh, it is a string. A string will be declared within the quotes. Numeric values will be declared without any quotes, right? Okay, very good question. What happen if we put the numerical with quotes, right? I'll tell you. Okay. There is a very good question over here. What will happen if we put numeric within the quotes, right? Okay. So let's say I'm defining A is equals to 56. Print age and print type of age. So it will be a string. Got it?
Am I clear? Mhm. Yeah, right, Abhishek, correct. No, age is not a numeric over here. What I told Vasi, if numeric values is not within the quotes, then only it will be numeric. Okay, if you put a quotes around it, it will not be a numeric value. Okay, and if it will not be a numeric value, then what happen? Let's say if I want to multiply age into 2, it will not do the numerical calculations. Okay, 56, 56, right? This is what happened. Same thing if you try to do with the weight. Weight is what? Numeric type, right? So if you do the numeric operation on the weight, let's say weight multiplied by 3. So for the weight, it will work. Okay, you can see for the weight, numeric operation, that is multiplication worked. Okay, multiplication worked, isn't it? But for the age, it is not working. Why? Because age is defined within the quotes. As it is defined within the quotes, Python is not considering it as a number. Okay, this is not a number for Python. This can be a number for Python, okay, if this is not within the quotes. Okay, it is not within the quotes, now it is a number. Okay, 56 into 2, 112. Now it is in the quotes, it will not be a number. If anything within the quotes, Python will not consider that guy as a number. Two point zero will be the float, right, Kanishk? Mm-hmm. Yeah, I'll tell you. Anil, I'll tell you that part. All right. So what we had seen till now? We had seen a numerical type, which is an integer. Integer will be what? Let me write it over here. Non-decimal values. Okay. Then we had seen float, decimal values, string defined within quotes. Okay. Not defined within quotes. This is also not defined within quotes. Okay. No need to memorize it. Okay. With practice, it will easily be kind of comfortable on it, right? Next, we have what? Sequence type. A string also comes under sequence type, right? This is also a sequence type, you can say. Okay. So here I'll write what?
list and tuple. Okay. So we had seen integer, we had seen float, we had seen string, right? Now let's say the list. If I'm putting something as a hashtag over here, it means it is a comment. Okay, comment is something which is not a part of code, right? So list is something which can store multiple values in a single variable. Like for example, I'm storing over here names, or you can say employee names, right? And I just store some random names over here, like Robin. Now, if I'll print it, it is a collection of values, right? Multiple values in a single variable, okay, defined in the square bracket. And how Python will consider it? Python will consider this guy as a list. That's why this is called sequence type. Okay, here data is present in a sequence. Okay, so list is something which is containing multiple values in a single variable. All right. Clear? Just work on the list. Let me know if you have any doubts in the list. So, list is something which can store multiple values in a, how we should, why you want to make notes? I am sharing the notes with you, okay? Don't worry, don't or try to create, because if you try to create the notes, you will not concentrate on the understanding, right? So I'm writing for you. So what is list? To store multiple values in a single variable. Okay, to store multiple values in a single variable. Right. So let's see. We have a multiple names we stored in a single variable. Now I want a single name from here. Okay. So if I want a single name from here, how can I access it? I can access it through like the 0, 1, 2, 3, 4. These are what? These are the addresses of these value, or you can say the index. Okay. That means if I want Ajay to be separated from here, I can do what? Print. The variable name is what? Employee names. Index 1. Okay. Right. Same way, if I want this name to be separated from here, what can I do? It is index 0, 1, 2, and 3. This is index 3, right? All right.
Kindly just do it and let me know if it is working. And in any case, if any error it is you are getting, please let me know. Alim, is it working for you? Almina, Alminia, is it working for you? हो रहा है कुछ कहीं पे प्रॉब्लम? आप कोड प्रैक्टिस करो ना अब्दुल्ला, आपको नोट्स क्यों प्रैक्टिस करना है? अच्छा अलमीन, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ सब कुछ, कोई बात नहीं। अब्दुल देखिए, आपको क्या करना है, प्लीज जस्ट प्रैक्टिस द नोट्स, मैं क्या बोल, प्रैक्टिस द कोड्स। ठीक है, आप कोड्स प्रैक्टिस करो। आप इसको क्यों प्रैक्टिस करना चाहती है? तो सिर्फ नोट्स बस समझने के लिए है ना, है ना अब्दुल? तो जैसे देखिए, ये अगर आपको कुछ लिखना है नोट्स में तो आप यहाँ टेक्स्ट क्लिक करके आप लिख सकते हो। ठीक है, आप किसी भी सेल के बाद आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो एक टेक्स्ट सेल क्रिएट हो जाएगा, उसमें आप टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, बट आप इसको क्रिएट करने का कोई जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप क्यों करोगे? मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना लिंक। ठीक है, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ ये वाला, तो आप ये क्यों क्रिएट करोगे? हाँ, जो कोड मैं लिख रहा हूँ आप वो कोड जरूर एग्जीक्यूट करो। ठीक है, आपको ये टेक्स्ट वाला पार्ट है, आप इसमें आप इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्योंकि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोड, है ना, ये कोड का पार्ट नहीं है। राइट अब्दुल, इज इट फाइन नाउ? हाँ, ये सब जो चीजें हैं प्लीज डू एग्जीक्यूट, ये आपको खुद एग्जीक्यूट करना है, ये सिर्फ मैं एग्जीक्यूट करके दे रहा हूँ इससे नहीं चलेगा, ये आपको खुद एग्जीक्यूट करना है, सो दैट यू कैन फाइंड आउट कि आप एरर कहाँ पे, गलती आप कहाँ कर रहे हो, है ना? राइट राइट अब्दुल, ओके, कोड्स आप लिखो, सिर्फ आपको कोड्स लिखना है, सिर्फ कोड्स लिखना है, ये चीजें आपको नहीं लिखनी है क्योंकि ये मैं ऑलरेडी लिख करके आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आप ये लिखोगे तो आप कोड पे आप कंसंट्रेट कम करोगे, ये आपके लिए क्यों दे रहा हूँ, ताकि आप इन फ्यूचर आप बाद में पढ़ो तो आपको समझ में आए चीजें कि हाँ ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था। राइट, सो जस्ट ट्राई टू राइट द कोड, एग्जीक्यूट द कोड, सो दैट ये पता चले कि हाँ दीज आर द मिस्टेक्स वी आर डूइंग। ठीक है, एक बार सब चीजें दोबारा से देख लेते हैं। देखिए, पाइथन जब हम पढ़ेंगे तो पाइथन वी विल स्टडी इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट, पहला पार्ट होगा बेसिक, दूसरा इंटरमीडिएट, तीसरा एडवांस। ठीक है, बेसिक के अंदर दीज आर द पॉइंट्स दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले हमने शुरू किया वेरिएबल्स एंड वैल्यूज से। ठीक है, वेरिएबल्स एंड वैल्यूज क्या होते हैं? इट इज लाइक ABCD। ठीक है, जैसे आप पहली बार पढ़ाई करना शुरू करते तो क्या पढ़ते? ABCD पढ़ते। ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ABCD है। ठीक है, हमें ये सीखना है कि किसी एक वैल्यू को वेरिएबल में कैसे स्टोर करें। जैसे अगर आपने मैथ में पढ़ा होगा तो आपने सिंपल इस तरीके से चीजें की होंगी, x इज इक्वल्स टू, लेट x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 2। सो ये x क्या मैथ में इसे क्या कहते हैं? x y को मैथ के अंदर क्या कहते हैं? वेरिएबल ही बोलते हैं ना, है ना? यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं? वैल्यूज बोलते हैं। सो प्रोग्रामिंग में भी वही है, प्रोग्रामिंग में ऐसा कुछ नहीं, कुछ अलग से नया वर्ड आ गया, सेम थिंग। राइट, सो हियर वेरिएबल्स एंड वैल्यूज, वेरिएबल्स आर द थिंग्स, ओके, जो कि कुछ वैल्यूज को स्टोर करेंगे। राइट, सो दैट वी कैन यूज दोज वेरिएबल्स अगेन एंड अगेन, हम उसको अलग अलग फॉर्म में यूज कर सकते हैं। हमें अब इस नाम को याद रखने की जरूरत नहीं है, वी कैन यूज दिस वेरिएबल्स एंड कैन गेट द आउटपुट। This is a way of declaring the variables and values. 3 lines of variables and values in 3 lines. We can declare variables and values in single line. We can declare multiple variables with the same value. Multiple variables की क्या है? Same values है ना? Done. Thereafter, we had seen the data types. Data types में हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है और नॉन न्यूमेरिकल हो सकता है। न्यूमेरिकल में अगर डेसिमल है तो पाइथन उसे फ्लोट समझेगा, दैट विल बी फ्लोटिंग टाइप। डेसिमल नहीं है तो दैट विल बी एंटीजर टाइप। ठीक है, ये क्या है? एंटीजर टाइप हो जाएगा। ठीक है, और अगर डेसिमल है तो दैट विल बी फ्लोटिंग टाइप। कोट्स के अंदर है दैट विल बी स्ट्रिंग टाइप। ओके, कोट्स के अंदर दिस विल बी स्ट्रिंग टाइप। राइट, thereafter we had seen the sequential data. Sequential में हमने क्या देखा? सबसे पहले लिस्ट।
List can store multiple values at the in single variable, where each value is having a address. जैसे आपके घर का एड्रेस होता है ना, same way each values are having a address, right? Those addresses are what their index positions. Okay, indexing will starts from 0, next value is 1 2 3 like this. ठीक है, so that using the index values you can find out the positions. ठीक है, next here we just picked one value from this list. हमने अजय को अलग किया, विपुल को अलग किया. Suppose I want these three things from here. Okay, so how can I do it? This can be done through slicing. Slicing कैसे? For example, you have to eat cake. अब पूरा का पूरा केक तो आप एक बार में नहीं खाते हो ना, आप उसे स्लाइस करोगे. ठीक है, for example, this is a cake, right? I have to eat a cake, so you'll slice a small portion of it like this. So that portion will be what? Will be in continuity. ऐसा तो नहीं कि नहीं यहाँ से थोड़ा सा निकाल लिया, यहाँ से थोड़ा सा निकाल लिया, यहाँ से थोड़ा सा निकाल लिया. जनरली हम ऐसा नहीं करते, राइट? रेयर केस में कोई कर रहा है तो दैट इज डिफरेंट थिंग. Okay, what is the general approach to eat a cake? Just slice it from a particular area. Same thing, slicing. Like I have to slice it this area and separate it for any processing, for any kind of operation. है ना? So how can we slice it? We can slice it like this. First of all, I have to write the variable name like employee names. Okay. Here index is what? 0 1. Index is 1 colon 3 वैल्यू चाहिए ना, so 1 plus 3 4. This is index 1. Okay, and from 1 I want 3 values. So how many values? Ajay, Robin and Vipul, 3 values. So 1 plus 3, this is 4. Okay, let's see. Slicing in list. ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंट, फिर वेरिएबल क्या हो गया? emp names. ठीक है, what is the first? From Ajay colon 1 plus 3. That is I want 3 values. ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल, लिस्ट वेरिएबल. ओके, इनिशियल इंडेक्स कोलन इनिशियल इंडेक्स प्लस नंबर ऑफ वैल्यूज. All right. Okay, we have 3 values now. You have named your list class. Class क्यों आपने नेम दिया है? Class, don't use the name class, use something else, क्योंकि class is inbuilt keyword. कुछ रिजर्व कीवर्ड होते हैं, ठीक है. सो क्लास इज इनबिल्ट कीवर्ड जो कि यूज होता है क्लास क्रिएट करने में. अब क्लास क्या चीज है आप समझोगे एडवांस पाइथन के अंदर. ओके, व्हाट इज क्लास इन पाइथन? दैट यू विल लर्न इन एडवांस पाइथन. जब हम एडवांस पाइथन की क्लास शुरू करेंगे, इन दैट थिंग यू विल कम टू दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास यूज होता है. सो क्लास एक इनबिल्ट कीवर्ड है, so don't use that. रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है, तो आप कुछ और यूज कर लो. ठीक है, so this is called slicing, right? अब slicing. Now next, if at a point of time you have to count the number of values in a list, how can you count the number of values in a list? Length function. This is what 5, right? So what are you doing? We are using a len. What len function will do?
number of values in a number of items in a sequential data type. ओके, किसी भी sequential data type के अंदर कितने items exist कर रहे हैं, that you can use with the help of len function, right? एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप इन चीजों को करो और फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. टू चेंज एनी एंटिटी इन अ लिस्ट, हम कैसे चेंज कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिक्वायर द लिस्ट वेरिएबल. ठीक है, राइट. आई वांट टू सपोज चेंज दिस पर्टिकुलर नेम. सो दिस इंडेक्स इज व्हाट? 0 1 2 3. ठीक है, 3. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू चेंज. ठीक है, this is Bipul, right? I want to suppose make it something else, like suppose I want to make it John. ठीक है, so before and after making the change I want to again view the things. Okay, so if you see, this thing changed to John before change and after change. Okay, fine. So these are things you work upon. Okay, now let me take your question. With the slicing or while displaying complete list, string data comes in output with single quotes, but it indexing does not. आपका क्वेश्चन समझ नहीं है मुझे, क्या कह रहे हो आप? With the slicing or while displaying complete, अच्छा ये displaying while displaying complete string data comes in output is in. ओके, फाइन. यहाँ पे आप ये कह रहे हो, राइट, कि ये यहाँ पे कोट्स में आ रहा है, यहाँ पे ये कोट्स में नहीं आ रहा है, राइट? इट्स ओके, दैट इज हाउ दिस इज हाउ द पाइथन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट किया गया, कुछ तो बैकएंड में रूल सेट किया गया, उसके अकॉर्डिंग ये अपना रिजल्ट दे रहा है. तो ये इससे ये लाइक डिफाइंड है कि अगर मल्टीपल वैल्यूज रहेंगे तो इट विल बी शोन इन कोट्स इफ इट इज नॉन न्यूमेरिकल. ठीक है, सिंगल वैल्यू है तो वो कोट्स में नहीं है इफ इट इज नॉन न्यूमेरिकल. सो इट्स फाइन. लाइक अगर आप नॉर्मली आप कोई आपने स्ट्रिंग भी डिफाइन किया है, सपोज आपने एक सिंगल स्ट्रिंग डिफाइन किया, आप उसे प्रिंट कर रहे हो, ये भी तो कोट्स में नहीं है ना? अगर आप कोई भी एक सिंगल स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हो, आपने आगे पहले भी किया है, जैसे आपने प्रिंट हेलो वर्ल्ड किया, तो हेलो वर्ल्ड भी तो कोट्स में नहीं है, सिर्फ हेलो वर्ल्ड ही है, राइट? सो बेसिकली इफ इट इज ए स्ट्रिंग एंड यू प्रिंटिंग इट, इट विल नॉट बी इन द कोट्स अगर ये एक सिंगल वैल्यू है तो, है ना? अगर मल्टीपल वैल्यूज हैं देन इट विल बी इन कोट्स, सिंगल कोट में आ रहा है. ओके, कैन बी एक्सेसिबल, क्या है, कैन बी एक्सेस लिस्ट फ्रॉम बैकवर्ड्स आल्सो. एक्सेस लिस्ट, हाँ बैकवर्ड, राइट. इधर से आप कह रहे हो कि इंडेक्सिंग हम इधर से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, राइट अनिल? देखिए, ये दिस इज इंडेक्स 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. ओके, अगर आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग करते हो then it will be -1, this is -2, this is -3, this is -4 and this is -5. ठीक है, अगर आप इधर से काउंट करते हो तो -1 से करोगे, इधर से करते हो तो 0 से करोगे. मतलब अगर आप -3 और 2 यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे 3 किया ना, तो 3 और -2 सेम है. अगर आप -2 भी करोगे तो भी आपको सेम रिजल्ट आएगा. ओके, मैं आपको शो कर रहा हूँ. जैसे यहाँ पे 3 पे क्या, इंडेक्स 3 पे क्या है, विपुल है, राइट? मैंने यहाँ पे क्या किया, -2 कर दिया फॉर एग्जाम्पल. सो -2 विल ऑल्सो गिव मी द सेम रिजल्ट. ठीक है, ठीक है. सो अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन से करते हो देन इट विल बी -1, -2, -3, -4 एंड -5.
फॉरवर्ड डायरेक्शन से करते हो 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, डेटा टाइप, हाँ डेटा टाइप एक बार और रिपीट कर दूंगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं। ओके फाइन, सो दिस इज द लास्ट थिंग दैट वी डू फॉर टुडे। ओके, नेक्स्ट क्लास से हम और इसके डीपर जाएंगे, बट आई वांट यू टू प्रैक्टिस दिस थिंग्स बिफोर फिनिशिंग दिस थिंग्स। कैन यू चेंज देयर पोजीशन? पोजीशन, हाँ पोजीशन वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, सब कुछ करेंगे नेक्स्ट सेशन से। एक बार मैं डेटा टाइप रिवाइज कर दूं, राइट? सो डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप बेसिकली ये, इसके अंदर हमें ये सीखना है, ये पढ़ना है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा दैट पाइथन सपोर्ट्स। देखिए जब आप पाइथन की कोडिंग करोगे आप किस तरह का डेटा यूज कर सकते हो। तो आप न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल दोनों डेटा यूज कर सकते हो। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल यूज करोगे तो आप जनरली इंटीजर या फ्लोट यूज करोगे। ठीक है, अगर डेसिमल टाइप का है तो पाइथन विल कंसीडर इट एज अ फ्लोट, अगर नॉन डेसिमल है तो पाइथन विल कंसीडर इट एज अ इंटीजर। ठीक है, फिर आ गया आपका स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग टाइप कोट्स के अंदर होगा, सिंगल कोट या डबल कोट मैटर नहीं करता, आप दोनों यूज कर सकते हो डिक्लेरेशन के लिए। अब जब डिक्लेयर कर रहे हो किसी भी स्ट्रिंग को एक वेरिएबल के अंदर, तो आप सिंगल कोट या डबल कोट कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रिंग में किसी भी तरह की न्यूमेरिकल ऑपरेशंस पॉसिबल नहीं है। जैसे यहाँ पे एज एज ए स्ट्रिंग डिफाइन हुआ है क्योंकि कोट्स है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल ऑपरेशंस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, 56 की वैल्यू डबल नहीं हो रही है, राइट? उसके बाद हमने देखा सिक्वेंशियल डेटा टाइप। सिक्वेंशियल डेटा टाइप में पहले हमने देखा है लिस्ट, टपल आज हम नहीं देखे, टपल हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, लिस्ट कैसे डिक्लेयर होगा? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, लिस्ट को आप डिक्लेयर कैसे करोगे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। मल्टीपल वैल्यूज यू कैन डिक्लेयर सेपरेटेड बाय कॉमा। ठीक है, उसे हम लिस्ट कहते हैं। वेयर ईच वैल्यू इज हैविंग अ सर्टेन इंडेक्स। Indexing you can consider starting from 0 1 2 3 and 4. From the backward direction it can be -1 -2 -3 -4 and -5. Like in this case, -4 and 1 is same, 2 and -3 is same, 0 and -5 is same, 3 and -2 is same, 4 and -1 is same, right? So using the index position you can access a single value. स्लाइसिंग करना है, स्लाइसिंग का सिंपल रूल है, लिस्ट वेरिएबल, इनिशियल इंडेक्स, कहां से स्लाइसिंग शुरू करनी है और आपको कितनी वैल्यूज चाहिए। सो यहाँ पे आई हैव टू स्टार्ट द स्लाइसिंग फ्रॉम इंडेक्स 1 एंड आई वांट 3 वैल्यूज, सो 1 + 3 इट विल बिकम 4। ओके, लेंथ फंक्शन कैन गिव यू द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ सीक्वेंशियल डेटा टाइप, कितने वैल्यूज है उसमें, राइट? किसी एक सिंगल वैल्यू को चेंज करना है, so we can change it like this, like by default it is Anuj, Ajay, Robin, Vipul and Amit, but हमने क्या किया, थर्ड इंडेक्स की वैल्यू को चेंज किया, so Vipul will become over here John, right? From when you will get the assignment? Yeah, I guess very soon you will get the assignments as well. Just practice these things as much as you can. I had already shared the file with you, okay? And let me know if you have something, and do your own research, because now you have a start with the Python. Now you can do your research, you can just visit some good websites, right? आप कुछ अच्छे वेबसाइट्स विजिट कर सकते हो। जैसे बेसिक बेसिक पढ़ना है तो आपको पहले W3 स्कूल्स आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप, ये आपको गूगल ड्राइव में सेव होता है नीति। W3 स्कूल्स के थ्रू आप बेसिक बेसिक पाइथन की प्रैक्टिस, बेसिक बेसिक पाइथन, इसमें एडवांस पाइथन तो नहीं है उतना, लेकिन अगर आप बेसिक स्टार्ट कर रहे हो तो अब वो चीजें आप यहाँ से इजिली प्रैक्टिस कर सकते हैं। पाइथन पे आपने क्लिक किया, ठीक है, तो दिस इज सम गेटिंग स्टार्टेड, राइट? कमेंट्स, वेरिएबल्स क्या है, ठीक है? तो दीज थिंग्स जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन इट, ओके? जस्ट प्रैक्टिस अ बिट व्हेनेवर यू गेट अ लिटिल टाइम। आपको कुछ नई चीजें यहाँ मिलेंगी, कुछ नई चीजें मिलती है, आप उसे नोट डाउन करो, राइट? एंड इफ यू हैव टू आस्क, प्लीज आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, डेटा टाइप्स क्या है, राइट?
लीड कोड के जैसे क्या है, आपका हैकर रैंक है, और दो चार और है, मैं आपको बता दूंगा। जो अगर लीड कोड के जैसा कुछ, अब बहुत लोगों को लीड कोड नहीं पता होगा, राइट? तो मैं अभी उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। तो I'll tell you some of the things like lead code, just like lead code, we have a hacker rank is there, geek for geek is there, okay, that can be used by data scientists, right? Like Anil said, ठीक है? तो वो सब चीजें हैं, बट ये बहुत लोगों को नहीं पता है, तो अभी उस उधर नहीं जाते हैं। लेटर ऑन मैं उस पे जब कुछ कंफर्टेबल हो जाएंगे कोडिंग के अंदर, देन आई कम टू दैट पार्ट, आई टेल यू हाउ टू यूज देम, राइट? ठीक है, तो ये कुछ आप प्रैक्टिस करो। ये था। और ये सेव कहाँ होता है? सेव होता है आपके गूगल ड्राइव में, ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है, बट यू कैन ऑल्सो सेव इट फ्रॉम हियर, राइट? फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ये सब कुछ क्लोज कर दिया, ठीक है, सब कुछ क्लोज कर दिया। ठीक, अब मुझे फिर से ओपन करना अपना फाइल, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोलैब ओपन करूंगा। ठीक है, कोलैब जैसे ओपन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो फाइल्स हैं वो शो होने लगते हैं, जो आपने पहले क्रिएट किया है। ठीक है, जैसे ये वाला फाइल अभी क्रिएट किया, शो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे क्लोज कर दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई इशू नहीं है। आप फाइल पे जाओ, ओपन नोटबुक करो। ठीक है, ओपन नोटबुक करोगे, आपको आपकी फाइल यहाँ दिख जाएगी, आप उसे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आपके गूगल ड्राइव में परमानेंटली सेव हो जाएगा। सो इन केस इफ यू आर चेंजिंग द सिस्टम, यू आर सिटिंग ऑन सम अदर सिस्टम, आप किसी और सिस्टम में बैठे हो, किसी और लोकेशन में बैठे, यू कैन इजिली एक्सेस योर फाइल, है ना? ठीक है, so in the next class we'll start from the tuple. So these were the just basic things. Please go ahead, okay, practice a bit, give at least half an hour of time, and then we'll see in the next session. Thank you guys. Shall we close it for now? Share the file once again. Sure, sure, sir. Hardik, एक मिनट रुको, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। Bye Abdul, thank you. Bye Anil, everyone, thank you. Take care. Have a great day.